नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को विद्यासागर क्लासेस नीट चैनल को समस्त को वेलकम। सो आज आम आउ गोटे नुआ टॉपिक रे आउ गोटे नुआ सेशन रे जॉइन हो जाइए जोड़ी की आम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जोड़ा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स मानक भितर गोटे नीट एग्जाम टाइम बोली से टॉपिक ऊपर डिस्कशन करबा तार किछिरा क्वेश्चंस अछि से क्वेश्चंस रो डिस्कशन करबा आ तार एनालिसिस मध्ये करबा एंड आई होप हमरो ए जति भी क्वेश्चंस अछि अराउंड 60 क्वेश्चंस अच्छे प्रॉपर एनालिसिस करके पढ़ा आउ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस अच्छे अलग अलग लेवल क्वेश्चन अच्छे अलग अलग टाइप्स क्वेश्चन अच्छी या द्वारा हम कौन ना तुम ओवरऑली सब गुड़ाक एक सागर कवर हो जाए ओवरऑल बेसिस सब गुड़ाक एक सागर कवर हो जाए तो से बोली बिना देरी करी विल स्टार्ट विथ द वीडियो है विल स्टार्ट विथ द वीडियो एक्टिव पार्टिसिपेशन तुम मैंने भी देखेगा निहाती जरूरी एंड अकॉर्डिंगली तापर हम कौन करबा ना प्रति क्वेश्चंस को एनालाइज करी पढ़िबा हैला। सो यस ए क्यूआर रे समस्त स्कैन करि देबे सो दैट बायोबाइट्स विथ संजना मैम एडा होचे मोर टेलीग्राम चैनल ए क्लास सरू मु तुमको सब गुड़ाक ये जो माने हमर पीडीएफ फाइल अछि जा अछि सब गुड़ाक मु साइड ए चैनल रे अपलोड कर देबी जोड़ा द्वारा कि तुमरो रिवीजन करिया रे भी हेल्पफुल हो आउ नॉट ओनली दिस आजिरो क्लास पई बोली नुहे अपकमिंग क्लासेस पई बोली मते तुम पई बोली हेल्पफुल हो आउ जति क्लासेस सब पूर्व हो जाई से क्लासेस गुड़ा पई मते तुम पई हेल्पफुल हो बिकॉज़ से क्लासेस गुड़ा सब हमरो जति भी सब पीडीएफ फाइल्स हे गला जति भी सब मटेरियल्स हे गला सब अवेलेबल अछि चैनल सब अवेलेबल अछि टेलीग्राम चैनल रे तो यू कैन फटाफट गो थ्रू इट जोड़ा रे कि तुम पई बोली हेल्पफुल हो संगे संगे फास्ट रिवीजन करिया पई बोली हेल्पफुल हो हैला। तो स्टार्ट करिवा वीडियो स्टार्ट करिवा क्वेश्चंस हैला जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके चलो स्टार्ट करिवा। क्वेश्चन नंबर 1 Question number 1. In Ferretima postuma, gaseous exchange occurs mainly through highly vascularized parapodia projecting laterally from the body segments, thin moist integument richly supplied with blood capillaries, tracheal tubes opening externally through paired spiracles, book lungs arranged in chamber-like abdominal sacs. Chamber-like abdominal sacs. है फर्स्ट तो फेरेटिमा पोस्टुमा कौन फेरेटिमा पोस्टुमा कौन फेरेटिमा पोस्टुमा होचंती हमर the members of the family phylum Annelida. These are the members of the phylum Annelida. और ए phylum रो ग्रुप रे हमें देखुचे ए phylum रो ग्रुप रे हमें देखुचे that मेटामरिज्म हमर फर्स्ट शो होच हैला मेटामरिज्म हमर फर्स्ट शो होच तो फेरेटिमा पोस्टुमा की है ये अर्थवर्म कॉमन नेम है अर्थवर्म है Annelida फाइलम को बिलोंग करूची आउ मेटामरिज्म माने ट्रू सेगमेंटेशन इज फर्स्ट शोन इन दिस फाइलम है आउ सेमानंगर जदी देखिबा नेफ्रिडिया होची एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ता जोड़ा कि ऑस्मो रेगुलेशन रे मध्ये हेल्प करची तो ता विषय रे जदी हम किछि स्टेटमेंट्स लिखिबा ताले ऑस्मो रेगुलेशन and excretion है osmoregulation and excretion this takes place by nephridium है अच्छा
highly vascularized parapodia projecting laterally from the body segments एटा केवल फेरेट एटा केवल हमरो annelida phylum रो गोटे मेंबर रे ही देखा जाउची सेटा हला नेरिस जोड़ा को aquatic annelid बोले मध्ये कहा जाउची aquatic annelid बोले मध्ये कहा जाउची सेमानकर lateral appendages अछि जोड़ा को कि parapodia कहा गला सेटा द्वारा सेमानकर respiration है बाकी normal periodema post तुम्हारे this is thin moist integument richly supplied with blood capillaries है ना richly supplied with blood capillaries है ना thin moist integuments which are richly supplied with blood capillaries एटा हे जबा हमर करेक्ट आंसर आ गोटे जदि कथा रहिला हमर annelida phylum भितर तीनटा मेंबर अछंती हैला तीनटा मेंबर अछंती कोन मेंबर अछंती गोटे तो हैला पेरिटिमा जोड़ा भी अर्थफॉर्म कहली आ गोटे हैला हिरुडिनेरिया लीच आ गोटे हैला नेरिस aquatic annelid aquatic annelid ता जोड़ा हैला ए भितरु हमर मोनोइशियस की आ डाइशियस की मोनोइशियस की और डाइशियस की मोनोइशियस डाइशियस माने हला द मेंबर्स ऑफ द फैमिली माने मेल और फीमेल गोटे ही बॉडी रे प्रेजेंट मोनोइशियस माने डाइशियस माने मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी रे प्रेजेंट तमाने पेरिटिमा और हिरुडिनेरिया हला ए दीना अर्थवॉर्म और लीच ए माने होचंदी मोनोइशियस ए माने होचंदी मोनोइशियस माने मेल और फीमेल गोटे ही बॉडी रे प्रेजेंट अछि while नेरिस जोड़ा कि aquatic annelid ता एडा होची डाइशियस आ जदि annelida phylum बे आ किछि कथा हबे बोली कहले से मानकर कोन रहउची ए मेंबर रो हमर मेटामोरिज्म आरंभ हो गले मेटामोरिज्म शो करचंदी organ system level of organization देखउचंदी आउ सिलोमेट ए कंडीशन शो करछ हैला तो हमर क्वेश्चन नंबर 1 रो ऑप्शन नंबर 2 हे जिवो करेक्ट आंसर ट्रैकियल ट्यूब्स ओपनिंग एक्सटर्नली थ्रू द पेयर्ड स्पाइरकल्स एडा का पे हे जिवो एडा हे जिवो कॉकरोच पे करेक्ट स्टेटमेंट पेरी प्लैनेट अमेरिका ना जोड़ा कि फाइलम ऑर्थ्रोपोडा को बिलोंग करछ हैला बुक लंग्स अरेंज्ड इन चैम्बर लाइक एब्डोमिनल सैक बुक लंग्स मध्ये हमर सही ऑर्थ्रोपोडा फाइलम रे बिलोंग करू ऑर्थ्रोपोडा फाइलम रो अछि जो मेंबर ता अराक्निड जोड़ा रे हमर स्कॉर्पियंस क्रैब्स स्पाइडर एमाने आसुचंती सेम मेंबर ऑफ द फैमिली बुक लंग्स द्वारा रेस्पिरेशन ठीक अछि देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 gills as respiratory organs are characteristically associated with gills काहे यूज होची हमर रेस्पिरेटरी ऑर्गन बड़ा efficient gaseous exchange in aquatic organisms prevention of water loss during terrestrial life atmospheric oxygen absorption through the alveolar membranes transport of gases through hemophilic circulation only gills as a respiratory organ is used by the aquatic organisms for efficient gases exchange. Option number A.
efficient gaseous exchange aquatic organism रे हेबा पई बोली सेमानकर gills use होची aquatic as a respiratory structure. gills कोडरे हमर यूज होची गुटे तो abundantly pisces fishes माने देखौचंदी कॉटेड मानक भीतर जदी देखिबा आ amphibians माने early stage of the life माने जतरा tadpole stage रे खाउचन सते बडे से माने gills रे tadpole stage रे थिला बेलको gills रे respiration होची डन हां बाबानी a चल नेक्स्ट क्वेश्चन 3 the right lung of human differs from the left lung because it contains two lobes due to cardiac notch present, possesses three lobes separated by fissures, lacks pleural membrane covering the pleural surface, pulmonary surface, is considerably smaller owing to hepatic displacement. Right lung how? Left lung, how is it different from each other? जदि हमें lungs ର structure देखिबा, we have two lungs, left side रे गोटे और right side रे गोटे, जोटा कि हमर wind pipe सहित attach हेगिरि अछि, wind pipe सहित attach हेगिरि अछि, ହେଲା wind pipe सहित attach हेजिरि अछि बोली कहले ए टाइप रो किछि रहइबा हमर ये हला राइट लंग, ये हला लेफ्ट लंग, एडी लेफ्ट लंग रे ना एडी अछि हमर कार्डियक नॉच, एडी अछि कार्डियक notch ହେଲା why because AD heart टा located अछि, AD heart टा located अछि then अच्छा एबे देखिबा लेफ्ट लंग रे कोन अछि, लेफ्ट लंग रे एडा हैला सुपीरियर लोब आ एडा हैला इंफीरियर लोब, से जो फिशर डिवाइडेड हेगी अछि सेडा कहला हॉरिजॉन्टल फिशर, horizontal fissure है ना एबे आसा नेक्स्ट राइट लंग रे देखिया हो गले एडा हला हमर सुपीरियर लोब, ये हला मिडिल लोब और ये है इंफीरियर लोब, इंफीरियर लोब ये सेपरेट होची हमरा हॉरिजॉन्टल फिशर रे आ गोटे हला ये हला हमरा ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक फिशर हला तमाने तामाने होची कि हमर ए तीनटा लोब हमर राइट लंग्स रे हमर तीनटा लोब अछि और लेफ्ट लंग्स रे दीटा लोब अछि, राइट लंग्स रे तीनटा लोब अछि और लेफ्ट लंग रे दीटा लोब अछि त माने राइट लंग रे हमर जो ह्यूमंस रो दे डिफर फ्रॉम द लेफ्ट लंग इन बिकॉज़ it possesses three lobes separated by fissures hela separated by fissures. Anand Gupta, kindly don't spam. If you don't know the language then please leave the chat, okay, if you don't understand the language then you can kindly leave the chat, ठीक है जी, you can leave, don't spam. next तो ये गला हमारा गोटे कोन लंग्स रो स्ट्रक्चर तार जदि हमें देखिबा तार जदि हमें देखिबा हला केमिति हमरो रहउची externally how is it covered hela ताले ये हेला हमर कोन these are the pleural membrane, these are the pleural membrane hela a pleural membrane दी प्रकार रहउची गोटे हला parietal pleura आ गोटे हला visceral pleura a pleural membrane और lungs भितरे हला lungs भितरे हमर कोन रहउचंदी pleural cavity रहउची, pleural cavity रहउची से भितरे pleural fluid रहउची, से भितरे pleural fluid रहउची और से fluid ता हेल्प कोन करची it helps in reducing है ना it helps in reducing the collapse of the lungs है ना or to reduce the friction among the layers of the lungs है ना
to reduce friction. तो ये गला हमर कोन ये गला हमर राइट लंग differ from left lung. How is it different? It possesses 3 lobes separated by fissures. 3 lobes it is separate or and is separated by fissures. Next question. 4. The exchange of respiratory gases in lungs occurs mainly through cartilaginous rings surrounding the primary bronchi, alveolar epithelium and pulmonary capillary membrane, smooth muscular lining of the tracheal passage, visceral pleura enclosing the thoracic cavity internally. है internally. ठीक तो एटा को कौन करा जीवो respiratory gases बा respiratory membrane कथा पचारछि हैला respiratory membrane कथा पचारछि एइडी हम देखुचे ये हला हमर alveoli alveoli रो ये हला हमर simple squamous epithelium simple squamous epithelium मेरी gases exchange हबा मोर blood vessel भितरे blood vessel संगे gases exchange हबा हैला तो एडा कोन हैला एडा हैला alveoli एडा हैला blood vessel ये हैला blood vessel अब ए दीटा भितरे हमें कोन देखुचे हैला ए दीटा कोन देखुचे हमें एडा हैला alveoli रो epithelium हैला एडा हैला alveoli रो epithelium जोड़ा को कोन कुआ जाउची it is made up of simple squamous epithelium simple squamous epithelium of alveoli हैला और एडा को कोन कुआ जाउची now this is the endothelium of blood vessel अब ए भितरे जो सब्सटेंस प्रेजेंट अछि एडा को जाउची एज बेसमेंट सब्सटेंस or basement membrane एडा बोली कुआ जाउची अब ए तीनटा लेयर देगिरी हमर गैसेस एक्सचेंज होची हैला फर्स्ट लेयर हैला simple squamous epithelium of the alveoli second layer हैला basement membrane or basement substance third layer हैला endothelium of the blood vessel ए तीनटा जगह मिसेगिरी हमर कुआ जाउची as respiratory membrane and it is less than 1 mm हैला it should be less than 1 mm माने जत्ते पतला हबो जत्ते वाइडर सरफेस एरिया हबो जत्ते मॉइस्ट रहबो मोर सरफेस ता सेते बेटर गैसेस एक्सचेंज हे हैला सेते बेटर गैसेस एक्सचेंज हे परिबो तो सेते मैं बोली एरा होची मोर जो भी गैस टाइप एक्सचेंज हबो ना माने अगर ऑक्सीजन alveoli रो आसिला ब्लड वेसल तो तीनटा लेयर दे गैस फर्स्ट है simple squamous epithelium of alveoli second है basement membrane और third है endothelium of the blood vessel आउ तार उल्टाडा हैला कोन तार उल्टाडा हैला एटा CO similarly एडो एडी गले मते से लेयर दे गिरी तो एडी alveolar epithelium and pulmonary capillary membrane हैला एडा हे जबो हमरो करेक्ट आंसर then next question number 5 the pleural fluid present between the pleural membrane functions mainly in just कथा हैला में आबे सर हैला कोन increasing friction during the expansion of lungs increase करबनी friction को increase करा जायनी हैला facilitating smooth respiratory movements of the lungs producing mucus for humidification of the inspired air carrying oxygen directly into the pulmonary alveoli कोन हबो 5 टा हिजबा हमरा B हैला B facilitating smooth respiratory movement of the lungs हैला smooth respiratory movement of the lungs आउ तांगर main function हैला कोन जे main function would be to reduce friction during
the expansion and relaxation of lungs within the walls of lungs and between lung wall and alveolar membrane. Lung wall and alveolar membrane. Ayola, B, correct. Next question. 6. The trachea remain patent during breathing because of circular smooth muscles surrounding respiratory passage, incomplete C-shaped cartilaginous rings supporting airway, stratified glandular epithelium secreting surfactant, dense connective tissue and enclosing bronchiolar lumen. ହେଲା ତ ଏଇଠି ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ सी ହେଲା ଟ୍ରାକିଆ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ୱିଣ୍ଡ ପାଇପ୍ କଥା ଆମେ ହଉଛେ ଏଇଠି ଟ୍ରାକିଆ ମାନେ ୱିଣ୍ଡ ପାଇପ୍ କଥା ହଉଛେ ଯୋଉଠି କି ଆମର ଏୟାରଟା ଯୋଉ ଆସୁଛି ସେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ୟାसेଜ ଦେଇକି ଆସୁଛି ସେଇଟା ୱିଣ୍ଡ ପାଇପ୍ ବା ଟ୍ରାକିଆ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଠି ଆମର they are enclosed by C-shaped incomplete cartilaginous rings. Now, so C-shaped incomplete cartilaginous rings, these are known as C-shaped incomplete cartilaginous rings made of which type of cartilage? It is made of hyaline cartilage. It is made of hyaline cartilage. ଆଉ ତାର କାମ କ'ଣ ତାର କାମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି how is it working to prevent the collapse of trachea collapse ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଟ୍ରାକିଆରେ C-shaped incomplete cartilaginous rings ଗୁଡାକ ସବୁ install କରି ଲଗାଉଛେ question number 7 diffusion of oxygen from alveoli into the blood occurs because partial pressure of oxygen is higher in alveoli than deoxygenated blood. Carbon dioxide concentration exceeds the nitrogen concentration in plasma. Hemoglobin actively pumps oxygen against the concentration gradient. Pulmonary arteries possess lower osmotic pressure than the alveoli. Diffusion of oxygen from alveoli into the blood occurs because ଆମେ କହୁଛେ କି ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କଥା ହେଲେନି alveoli ଆଉ blood vessel ଭିତରେ ହେଲା ଏଇଠି ଯୋଉ ଆମର ଗ୍ୟାସ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଏଇଟା ଆମର diffusion ଦ୍ୱାରା ହଉଛି diffusion ର ମାନେ କ'ଣ the transfer of gas from a region of higher concentration to a region of lower concentration. ठीक अच्छे एडा हेला हमर नॉर्मल डिफ्यूजन काहे कि एडा हमर अल्वेओली रो ब्लड को जाउची ता माने होची कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेशर ग्रेडियंट या ही दिबो ठीक अछि partial pressure of oxygen is higher in alveoli than deoxygenated blood alveoli re partial pressure of oxygen ता higher थाई और alveoli रे partial pressure of oxygen केते रहउची alveoli re partial pressure of oxygen it is 104 mmHg ହେଲା 104 mmHg 8 से deoxygenated blood रे तो partial pressure of oxygen is 40 mmHg तो lower concentration higher concentration lower concentration को आसे बनी आती हैला higher concentration lower concentration आसे बनी आती ठीक हां भवानी ठीक अछि हैला नेक्स्ट 8 which of the following correctly represent approximate partial pressure of oxygen in the alveoli just a bit discussion कर लो हैला just a visual visceral discussion करी लेही oxygen रो partial pressure alveoli it is 104 mmHg जदि आमे देखिबा तीनटा जिंस हला ना तीनटा जिंस कहूची मु पार्शियल प्रेशर फर्स्ट कोन फर्स्ट तो पार्शियल प्रेशर कोन एडा आगो देखिबा पार्शियल प्रेशर इज द
the pressure of individual gas in a mixture of gases. The pressure of individual gas in a mixture of gases. ଆମ environment ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରକାରର gases present ଅଛି. ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରକାର air ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରକାର ଆମର gases present ଅଛି. ସେ ଭିତରୁ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ର ପ୍ରେସର ଟାକୁ ମୁଁ मेजर କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ partial pressure of that particular gas ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି. ମୁଁ ଏବେ ମୁଁ ସେମିତି ऑक्सीजन रो partial pressure भी काढी परिबी, कार्बन डाइऑक्साइड रो भी काढी परिबी, नाइट्रोजन रो भी काढी परिबी, जोथरा इच्छा अछि मते मु सेइथरा काढी परिबी. केमिति काढी परिबी partial pressure देखो. जदि फॉर एग्जांपल हमर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज ऑलवेज कांस्टेंट. सब बोले सेरा कांस्टेंट है. आ ता वैल्यू केते एटमॉस्फेरिक प्रेशर केते रहउची 760 mmHg. हला 760 mmHg. एडा हला गोटे कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमर. एडा केबे चेंज होबो. हला एटमॉस्फेयर रे ऑक्सीजन रो मात्रा केते अछि? ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 21%. 21% रे हमर ऑक्सीजन प्रेजेंट अछि. तो एबे 21% ऑक्सीजन रो पार्शियल प्रेशर केते हमर एटमॉस्फेरिक जितो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ता 760 mmHg. ताला में एमिदी प्रेशर कर परिबा. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 21% ऑफ 760 mmHg, which is equals to 21 by 100 into 760 mmHg. जोटा कि हमर किछि पॉइंट रे वैल्यू आसीबो. हला किछि जोटे पॉइंट रे वैल्यू आसीबो. बट हम सेडा कोन करछे 159 राउंड ऑफ करी एडा हेला हमर करेक्ट. हला एडा हेला हमर करेक्ट स्टेटमेंट. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर एबे कहबी तीनटा जिंस कोन ना. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर केते, partial pressure of oxygen in alveoli ये कहते हैं. a partial pressure of oxygen in oxygenated blood सी कहते हैं. ए तीनटा वैल्यू जदी देखिबा ताले गोटे तो हमें एटमॉस्फेयर रो पार्शियल प्रेशर हमें काढी ले जस्ट. हला इट इज 159 mmHg. ठीक अछि. alveoli रो पार्शियल प्रेशर एडी देखिले 104 mmHg. आओ partial pressure of oxygen in oxygenated blood देखिले it is 95 mmHg. अच्छा एडी गोटे जिंसरे मार्क करो. एडी गोटे जिंसरे मार्क करला बडा रहउची जे काहे कि हमर 159 to 104 104 to 95 हमें जते बडे इनहेल कोचे एटमॉस्फेयर रे 159 रिप्रेजेंट अछि. alveoli जाय गला हडको 104 ही जाउची. तापर ब्लड रे जाई मिसिला हडको 95 mmHg ही जाउची. काहे कि जते कि अमाउंट बा जते कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमें इनहेल कला हडको नेकी जाइतिले सेति कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन काहे हमर यूटिलाइज होउनी. व्हाई इज इट नॉट यूज्ड? हला बिकॉज़ कोन होउची ना ह्यूमिडिफिकेशन. है ना ह्यूमिडिफिकेशन. ह्यूमिडिफिकेशन कोन? ह्यूमिडिफिकेशन रो माने हला कि आमे जतले एटमॉस्फेयर रो एयर टा इनहेल करछे तो हमरो रेस्पिरेटरी कैविटी दे ट्रैक्ट देगिरी. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देगिरी माने नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकियल, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्शियरी ब्रोंकी सब हे alveoli जाय गला आडको जो सेल्स जोडा हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रेजेंट अछि ना से माने किछरा हमर अमाउंट ऑफ गैस यूज कर दोचंती. ता परे बाकी जति की रहिला हमर alveoli जाय जाउची जोडा कि 104 mmHg रे जाउची बोली हमें कहउचे. ता परे पुणी ओथे गैसेस एक्सचेंज होची हमर alveolar membrane संगे रही गैसेस एक्सचेंज होची. गैसेस एक्सचेंज होला परे ता परे जो गैस रो जो हमर गोटे जगह रो आउडी जा पास ही जाउची रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन देग्री जते बले से पास ही जाउची तोळे मध्ये किछडा अमाउंट ऑफ एयर किछडा अमाउंट ऑफ प्रेशर हमर यूज ही जाउची. एंड आफ्टर व्हिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड रे हमर केवल 95 mmHg रो ब्लड ही माने ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होची. हला सो ये हेला हमर फुल कंप्लीट डाटा. हला ये हेला फुल कंप्लीट डाटा. देन हेला क्वेश्चन नंबर 9. Carbon dioxide diffuses from tissues into blood because blood plasma possesses greater oxygen affinity than tissues. Partial pressure of carbon dioxide is higher in tissues. Hemoglobin reversibly binds carbon dioxide in alveoli.
Nitrogen concentration decreases significantly. Carbon dioxide diffuses from tissues into the blood because it is partial pressure of carbon dioxide is higher in the tissues. ହେଲା ଆମର କଣ କେତେବେଳେ ହଉଛି ଆଲଭିଓଲାଇ ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନହେଲ କରୁଛେ ଅକ୍ସିଜେନ ର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଅଧିକା ଥାଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ ର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଅଧିକା ଥାଉଛି ଆଉ ବ୍ଲଡ ଭେସେଲ ରେ ଅକ୍ସିଜେନ ର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କମ ଥାଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଅଧିକା ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କମ ହବ ଆଉ ଏଇଠି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଅଧିକା ହବ ତ ତ ଅକ୍ସିଜେନ diffuses from alveoli to blood tissue एमती है एमती आउ कार्बन डाइऑक्साइड diffuses from blood tissues to alveoli हमारा एट है उल्टा होची ठीक अछि उल्टा होची एरा हला हमर रीजन पार्शियल प्रेशर जोडी अधिका दिबो सेडू आउ जोडी कम थिबो सेडी कि जिवो ना हाई कंसंट्रेशन रो लोअर कंसंट्रेशन को जिवो सिंपल है सिंपल क्वेश्चन नंबर 10 the majority of the oxygen in human blood is transported as dissolved directly within the plasma water molecules bound reversibly with hemoglobin as oxyhemoglobin combined chemically with bicarbonate ion in erythrocytes attach irreversibly to plasma globulin proteins. What C, D. Majority of the oxygen. Oxygen the majority केमिति transfer होची oxyhemoglobin form करछबा oxyhemoglobin form करूजीबा ऑक्सीजन को पचारछि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन को पचारछि तो हम ब्लड वेसल रे आरबीसी अछि ब्लड प्लाज्मा मध्ये अछि ऑक्सीजन तरह ट्रैवल करिके आसुछि 3% is dissolved in the blood plasma. It is dissolved in the blood plasma. आउ जो 97 अछि 97% बाकी अछि सेइरा हमर कोन करबो ना हीमोग्लोबिन संगे बाउंड करिके ଗୋଟେ कंपोनेंट बनेबो HbO2 रिवर्सिबली सेरा को आगला HbO2 which is oxyhemoglobin हैला oxyhemoglobin ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कथा पचारछि ना ऑक्सीजन मेजॉरिटी हमर oxyhemoglobin फॉर्म करिके ही जाउछि हैला oxyhemoglobin फॉर्म करिके ही जाउछि 11 Most carbon dioxide is transported in the blood in the form of carbaminohemoglobin associated with protein chains, dissolved gas within the pulmonary plasma exclusively, bicarbonate ion generated through hydration reactions, carbonic acid remaining undissociated in the erythrocytes. एटा को है 11 सी एबे सी हो ठीक अछि ना हैला एबे बाइकार्बोनेट आयंस हिसाब रे से माने ट्रावल करने कार्बन डाइऑक्साइड ता मेजरली हमर बाइकार्बोनेट हिसाब रे
ट्रैवल करछ एटा जदी देखिबा हमें आरबीसी रो स्ट्रक्चर हैला कार्बन डाइऑक्साइड आसिला कार्बन डाइऑक्साइड रो 7% is dissolved in the blood plasma हैला आउ केते रहला आउ रहला 23% ये हमर हीमोग्लोबिन संगे मिसी गेली ये गोटे कंपोनेंट रिलीज करछि HbCO2 बोली कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स हैला आउ आउ जो 70% ट्रैवल करछि सी हमर H2O संगे बाइंड कर जाउछि कोन करला सी हमर इडी H2O संगे बाइंड करिगिरी कार्बोनिक एनहाइड्रेस गोटे एंजाइम रे अछि कार्बोनिक एनहाइड्रेस the reaction the effect H2CO3 which is carbonic acid सेरा हमर फॉर्म कर दोछि हैला सेरा हमर फॉर्म कर दोछि तबरे पुणी ये डिसोसिएट होछि into by the help of carbonic anhydrase आउ पुणी डिसोसिएट हेगिरी H plus आउ HCO3 minus 1 होछि हैला HCO3 minus 1 होछि HCO3 minus जो बनौछि ये अधिका टाइम पे बोली आरबीसी रे रही परिबोनी हैला तो ये कोन होछि ये हमर बाहरी आछुछि आ ता बदल रे गोटे क्लोराइड आयन डे एंटर करछि and this all takes place by a bicarbonate chloride exchanger अब ये जो फेनोमेना एडा को कहा जाउची as chloride shift कहा जाउची या फिर एडा को हैमबर्गर्स फेनोमेना बोली मध्ये कहा जाउची हैला हैमबर्गर्स फेनोमेना बोली मध्ये कहा जाउची तो ये हे गेला हमर कोन ना ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैला ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ठीक अछि हे गेला डन अच्छा तो तापे ही बोली सेति में बोली से हमर केमिति कार्बन डाइऑक्साइड ता केमिति ट्रैवल करछि कहले इट इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयंस जनरेटेड थ्रू द हाइड्रेशन रिएक्शन बोली कहले से H2O संगे बाइंड करला पर जो क्वेश्चन माने जो रिएक्शन ता बनेला तापर बाइकार्बोनेट को से रिलीज करला एडा हे गेला हमर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट ऑफ 70% से हमर बाइकार्बोनेट आयन हिसाब से ट्रैवल करूची सेति में बोली एडा हमर को होय होची ना मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड हमर एज बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज होची बॉडी रो हे गेला नेक्स्ट क्वेश्चन 12 the enzyme carbonic anhydrase present in the erythrocyte catalyzes oxygen binding with ferrous component of our hemoglobin conversion between carbon dioxide and carbonic acid oxidation of glucose during aerobic respiration hydrolysis of fibrinogen during the clot formation हैला during the clot formation नीट रे 671 स्कोर होतला पुणी टफ आसिले कोन करबो किछ असुविधा नै रादी तमरो 671 स्कोर करि परछ जदी बोली कहले एबे मते बेटर स्कोर करबो तबे टफ आसिले ले मते तमे 600 तो स्कोर करि परिबो ना नहीं 600 तो स्कोर करि परिबो ना नहीं जदी पेपर टफ आसुची खाली तम पय बोल तो टफ आसीबो समस्तन पय बोली टफ समस्तन पय टफ आसिला बेलु को कट ऑफ हमर निहाती तळ बुझी हला सेति पय बोली व्यस्त होनी प्रिपरेशन करू हला बी यस कन्वर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बनिक एसिड जोटा कि हम जस्ट इनिशियल रिएक्शंस रे देखिले कोन कार्बन डाइऑक्साइड हमर हाइड्रोलाइसिस करिगिरी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करिगिरी कार्बनिक एनहाइड्रेज रो हेल्प रे H2CO3 बनेबा पुणी हमर से कार्बनिक एनहाइड्रेज रो हेल्प रे हला H plus plus HCO3 minus एडी बनेबा हला एडी बनेबा एडी कार्बन डाइऑक्साइड रो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एटा को हमर कार्बनिक एसिड बोली कहा जाउची कार्बनिक एसिड बोली कहा जाउची
है ना ये हमर फॉर्म करछे एटा तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट यस 13 Bohr effect refers to increased oxygen affinity of hemoglobin at high pH, reduced binding of oxygen with hemoglobin due to elevated carbon dioxide, permanent dissociation of hemoglobin into the globin chains, and enhanced nitrogen diffuses across the alveolar membrane. कौन होगा 13 नंबर क्वेश्चन देखो हमर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कथा जदि बुझिबा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कथा जदि बुझिबा हाउ इट डज इट वर्क्स हला हाउ डज इट वर्क्स ये होची हमर कर्वटा जोडी की हमर ग्राफटा ए टाइप रो हला एडा हला पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाउ ये हला हमर affinity of hemoglobin to bind with oxygen affinity of hemoglobin to bind with oxygen एबे कोन होची हमर ना बोर इफेक्ट रे कोन हबो ना increase in CO2 or decrease in pH reduces the affinity of hemoglobin for oxygen काहेकि एटा को स्टेटमेंट ता काहेकि ना हम जानचे गैस रा एफिनिटी हमर CO रो अधिका सबुट तापर CO2 तापर ऑक्सीजन तो बोर इफेक्ट रे कहला कोन ना कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जदी अधिका ही जाउची कार्बन डाइऑक्साइड जदी कंसंट्रेशन जदी अधिका ही जाउची हमर ब्लड रे ताले हमर कोन होई जबो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन कमी जबो नियादी काहेकि ना ग्रेटर एफिनिटी हमर कार्बन डाइऑक्साइड पे बोली देखौची मोस्ट एफिनिटी हमर कार्बन मोनोऑक्साइड पे बोली देखौची एटा हला बोर हला एटा हला बोर इफेक्ट आ एटा जनरली कोडी देखिया मिलुची कहलो टिश्यूज रे देखिया मिलुची ना टिश्यूज रे जेतले कार्बन डाइऑक्साइड रो कंसंट्रेशन अधिका थाउची यूज होला पर तो ऑक्सीजन पे एफिनिटी कमी जाउची टिश्यूज माने ऑक्सीजन संगे बाइंड कर दोचन टिश्यूज रे जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट थाउची एबा से हाल्डेन इफेक्ट deoxygenated hemoglobin has greater affinity for CO2 than oxygenated hemoglobin. एटा कौन कहला एटा कहबा अनुसार कि हीमोग्लोबिन रे जदी हमर ऑक्सीजन अटैच हे नथिबो हीमोग्लोबिन रे हमर जदी ऑक्सीजन प्रेजेंट नथिबो ताले से हीमोग्लोबिन रो एफिनिटी रा कार्बन डाइऑक्साइड पे बोली अधिक था आउ जो हीमोग्लोबिन रे ऑक्सीजन रा प्रेजेंट थिबो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन रे कार्बन डाइऑक्साइड रो एफिनिटी टुवर्ड्स दैट हीमोग्लोबिन सेडा हमर कम है ना सेडा हमर कम था तो ये गेला हमर एडा हमर जनरली लंग्स रे एडा यूज होछ तो एडी कोन हैला कर्वटा हमर दी प्रकार हे परबो बोर इफेक्ट रे कार्बन डाइऑक्साइड ता बढ़िले एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन माने ऑक्सीजन ता कमी जाउची ना तो ये हमर धीरे धीरे एफिनिटी कमी जी हैला अब एडा भी हमर बोर इफेक्ट कहा जाउची अब बोर इफेक्ट रो रिजल्ट रे हमर कर्वटा राइट शिफ्ट पड़ोची अब एडा टिश्यूज रे काम करूची हैला टिश्यूज रे काम करूची तार उल्टाडा होची हमर एटा जोड़ा हैला कोन एडा को आगला हाल्डेन इफेक्ट जोठी की ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाइन बोली ऑक्सीजन रा एफिनिटी दा सबुडु अधिक था हैला अब एडा हमर लेफ्ट शिफ्ट कॉज करूची जोड़ा हमर लंग्स रे अकर होची हैला प्रणाम पदला तो ऑप्शन नंबर 8 कोन हे जिवो reduced binding of oxygen with the hemoglobin due to elevated carbon dioxide level बढ़ी गला जो हमर ऑक्सीजन पई बोली एफिनिटी कमी जाउची हीमोग्लोबिन रो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी बाल ऑक्सीजन पई बोली एफिनिटी रा कमी जाउची हे गला डन क्वेश्चन नंबर 13 तापर आसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14
The volume of air inspired or expired during normal quiet breathing is termed as normal quiet breathing. प्रणाम प्रणाम सनातन देख ये हूँ आमर कौन ग्राफटा जदि बनवा ए टाइप ग्राफटा बनाऊे जोटी की एटा डिनोट कर नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन है एटा नॉर्मल ब्रीदिंग ये नॉर्मल ब्रीदिंग अब नॉर्मल ब्रीदिंग टाको हमें टाइडल वॉल्यूम बोली कहू टाइडल वॉल्यूम केते रेंज पड़ुची 500 ml रे रेंज पड़ुची हैला 500 ml रे रेंज पड़ुची अच्छा जदी फोर्स्ड इंस्पिरेशन करा होची फोर्स्ड इंस्पिरेशन देन कोन होची फोर्स्ड इंस्पिरेशन करले हमर किछि अमाउंट ऑफ एयर हमें फोर्सफुली इंस्पायर करि पाउचे सेटा कहला आईआरवी और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जोटा कि हमर 2500 रु 3000 ml जाय रेंज 2500 रु 3000 ml जाय रेंज सेम एयर टाइम हम जतले फोर्सफुली एक्सपायर करछे हैला फोर्सफुली एक्सपायर करछे एरा कहा जाउची ईआरवी हैला एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जोटा कि हमर केते 1000 रु 1100 ml जाय रेंज 1000 रु 1100 ml जाय रेंज हैला आउ आउ जदि एबे कैपेसिटीज कथा देखि आरंभ करबा ताले ए ऊपर दिरा मिसेगिरी माने आईआरवी आउ टीवी मिसेगिरी रा कहा जाउची इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और आईसी हैला तापर एडा मिसेगिरी ईआरवी प्लस टीवी एडा मिसेगिरी हमर होची एक्सपिरेटरी कैपेसिटी या फिर एडा कहा जाउची ईसी टोटल ला जते बडे एडी मिसेबा एडा कहा गला वाइटल कैपेसिटी या फिर वीसी हैला अच्छा आओ ना किछि अमाउंट ऑफ एयर हमरो एठी किछि अमाउंट ऑफ एयर एडी लंग्स रे ही रहि जाउची इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन एतिकी वॉल्यूम ऑफ एयर हमरो बॉडी रु माने हमरो लंग्स रु रिलीज होउनी हैला एडा कहला कोन रेसिडुअल वॉल्यूम हैला दिस वॉल्यूम ऑफ एयर is not released from the lungs even after forceful expiration why to prevent the collapse of lungs हैला एडा कहला कोन एडा कहला एज रेसिडुअल वॉल्यूम हैला एडा कहला एज रेसिडुअल वॉल्यूम एबे आसो हम जदी टोटल कैपेसिटी को देखिबा एडु एतिकी तो हमर वाइटल कैपेसिटी हैला एडु एतिकी पूरा हे गेला हमर कोन ना टोटल लंग कैपेसिटी और टीएलसी बोली कहा जाउची टोटल लंग कैपेसिटी बोली कहले आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी एडा मिसेगिरी हमरो टीएलसी हे गेल हैला अब आईआरवी टीवी आरवी मिसेगिरी आईआरवी टीवी ईआरवी रो माने कोन वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी तार माने हैला टीएलसी हैला तार माने हैला टीएलसी तो एडी हे गेला हमरो सबु जहा सब हमरो इंस्पिरेटरी नहीं तो respiratory volumes and capacities
रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज विषय हमर एठी पूरा पूरी कंटेंट ता मिल गला हैला। तो एडी आंसर हिजबो कोन वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग। नॉर्मल ब्रीथिंग दा होचे हमर कोन टाइडल वॉल्यूम हैला, टाइडल वॉल्यूम। अच्छा आ गुटे जिंस मतलब टाइडल वॉल्यूम रे रहला कोन हमर एटा ना टाइडल वॉल्यूम रे हमें कहले नॉर्मल ब्रीथिंग रे हमें 500 ml ऑफ गैस इनहेल और एक्सहेल करछे किंतु कोन 500 ml ऑफ गैस हमर गैसेस एक्सचेंज रे इन्वॉल्व होची। हमें कहले कि हमर प्रेशर ग्रेडियंट ता कमी जाउची जेमिति जेमिति हमें टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द लंग्स को मूव करछे हैला। ता माने कंसंट्रेट माने ये ग्रेडियंट ता कमी जाउची बोली कहले प्रेशर ग्रेडियंट कमी जाउची बोली कहले गैस रो ग्रेडियंट मध्ये कमी जाउथबो अमाउंट मध्ये कमी जाउथबो कमी जाउची निहाती 150 ml और 350 ml रे ये बाइफरकेट हेगिरी 350 ml ही हमर गैसेस एक्सचेंज रे इन्वॉल्व 350 ml ही हमर गैसेस एक्सचेंज रे इन्वॉल्व आउ बाकी 150 ml आउ बाकी 150 ml सी हमर कहा रे इन्वॉल्व रहउची से डेड स्पेस रे रहि जाउची सी आसिरी डेड स्पेस रे रहि जाउची हैला। तो ये जब कोन ऑप्शन नंबर डी इजबो करेक्ट आंसर हैला। डी इजबो करेक्ट आंसर। एडी आ गुटे मतलब पॉइंट मिस कर देले कोन ना ईआरवी और आरवी ईआरवी प्लस आरवी एडा मिसी होची एफ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और जोड़ा होगी एफआरसी बोली कोइ जाउची हैला एफआरसी बोली कोइ जाउची। तो ये गेला पूरा हमर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज ऊपर पूरा कंटेंट ता जो प्रकार भी क्वेश्चन आसीबो जेमिति भी क्वेश्चन आसीबो आईवी आईसी ईआरवी टीआरवी ईआरवी टीवी आईआरवी आरवी टीएलसी डीसी आईएम एरा सब आईएस एबे समस्त तमाने करि परिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 inspiratory reserve volume refers to देखो एबे तो करि परिबो आई गेस maximum additional air inspired after forceful inspiration, air remaining inside the lungs after forceful expiration, volume exchanged during ordinary respiratory movements, maximum air expired following the tidal expiration. Baida, this is A. Subhashish. Maximum additional air inspired after normal inspiration. एटा हेगला हमर आईआरवी बा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जोड़ा कि हमर 2500 रु 3000 ml जाए रेंज पहुंच 2500 रु 3000 ml जाए रेंज पहुंच। नेक्स्ट 16 bronchial asthma is primarily characterized by fibrosis and destruction of alveolar walls permanently, inflammation and narrowing of bronchioles causing breathing difficulty, bacterial infection producing fluid-filled alveoli, or genetic deficiency of hemoglobin synthesis. The genetic deficiency of hemoglobin synthesis pathways. Inflammation and narrowing of bronchioles causing the breathing difficulty. Yes, 16 B. Now, एरा हमर कहा पे बोली होची एलर्जी रिएक्शंस पे बोली होची एलर्जिक रिएक्शंस पे बोली होची कौन से प्रकार एलर्जी द्वारा जदि तमे इन्फेक्टेड हे जाइबो ताहले से केस रे आजमाडा हमर होची। अच्छा गोटे हमर बैक्टीरियल डिजीज मध्ये अछि बैक्टीरियल डिजीज मध्ये अछि जोडा कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्रिएट करि पाछ एरा कोला कोन दैट इज निमोनिया हैला सेराला निमोनिया एरा मध्ये गोटे प्रकार डिजीज ता जोडा कि हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करछि बाकी इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज बोली कहले बैक्टीरिया द्वारा कॉज होत बनियाती हां वॉइस इज इन भलो इन स्पाइसिस
से टिके भलो हैला आडू पुणी खराब हो जाउछ। अच्छा देखो निमोनिया हमर दीटा डिजीज दीटा बैक्टीरिया पई बोली हमर इन्फेक्टेड होई पारुछ बा कॉज होई पारुछ सेडा हला गोटे हला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी आ गोटे हला हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा है ना। और जनरली ये कौन इन्फेक्ट करछि ना लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इट इन्फेक्ट्स द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना माने एल्वियोली को इन्फेक्ट करछि एल्वियोली को इन्फेक्ट करछि और एडी म्यूकस फिल कर दोछि म्यूकस फिल्ड बा फ्लूइड फिल कर दोछि जा द्वारा होछि कोन ना गैसेस improper gaseous exchange improper gaseous exchange हेबा जोगु hypoxia होछि hypoxia माने होछि deficiency of oxygen in the body tissues and the body turns grayish blue body पूरा नेली पड़ी जाउछि हैला काहेंगी काहेंगी ना डेफिशिएंसी हे जाउछि ऑक्सीजन रो प्रॉपर टिश्यूज को हमर प्रॉपर ऑक्सीजन अमाउंट रे मिली पारुनी सेति में बोली हमर ए प्रकार प्रॉब्लम देखा जाउछि एडा गोटे बैक्टीरियल डिजीज आ गोटे सेमि गोटे वायरल डिजीज अछि जोडा की हैला कोन ना कॉमन कोल्ड and it is caused by rhinovirus सेहिति बोली कॉमन कोल्ड को राइनिटिटाइटिस बोली मते कुआ जाय आउ rhinovirus or common cold it infects our lower pneumonia it infects our upper respiratory tract है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट माने कौन इन्फेक्ट करछि नेजल कैविटी pharynx larynx हैला सेति में बोली हमर ठंडा हेले नेजल कैविटी नाक चोक हे जाय हैला म्यूकस बॉडी भरी जाय आउ नाक चोक हे जाय pharynx जोडा कि हमर कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर सेइ डारे हमर इन्फेक्शन हेबा जोगु इन्फेक्शन हेबा जोगु हमहु कथा कहबारे मते पेन हुए किछि खाइला बेलगु मते पेन हबो तापरे लैरिंग्स जोडा को भी वॉइस बॉक्स बोली कुआ जाउछि लैरिंग्स जाय मते हमर इन्फेक्शन ता वाइडन अप हे परिबो जोडा द्वारा कि हमर थ्रोट इन्फेक्शन को मते से कॉज कर हैला तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रोड्यूसिंग फ्लूइड फिल्ड एल्वियोली जो ए ऑप्शन रे देछि एडा जो हमर कोन एडा जो हमर निमोनिया है ना। नेक्स्ट आसो क्वेश्चन नंबर 17 देखो पढ़े आसले से क्वेश्चन ना pneumonia is a respiratory disorder in which alveoli become inflamed and filled with fluid bronchiole permanently dilate without infection pleural membrane lose lubricating pleural fluid respiratory centers cease the impulse generation suddenly pneumonia हला हमर गोटे कोन ना respiratory disorder which is caused by bacteria आ को बैक्टीरिया कॉज करूची is streptococcus pneumoniae आउ hemophilus influenza तो ये हैला कोन ना हमरा ऑप्शन नंबर ए alveoli become inflamed and filled with fluid है ना हम alveoli जत्ते पतला हबो मेम्ब्रेन दा सते बेटर गैसेस एक्सचेंज हे परिबा तो एडी जदी हमर फ्लूइड फिल हे जिवो गैसेस एक्सचेंज बार इंटरप्शन हबो हैला ए टाइप रा हमर कंटेंट एडी देखा जाउ क्वेश्चन नंबर 18 cyanosis during respiratory insufficiency occurs because excessive oxygen saturation of arterial blood develops
Deoxygenated hemoglobin concentration increases significantly. Carbon dioxide is absent completely from the circulation. How? Platelet aggregation blocks the pulmonary capillary flow. Cyanosis. एडर हम कौन हिमोग्लोबिन कंसंट्रेशन आमर डीऑक्सीजनेटेड हेगिरी हम से मानकर डीऑक्सीजनेशन आमर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाउछ डीऑक्सीजनेटेड हेबाडा बॉडीडा हमर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाउछ जा द्वारा कि कार्बन डाइऑक्साइड रो कंसंट्रेशन बॉडी रे बढ़ी जाउछ H प्लस रो कंसंट्रेशन बॉडी रे बढ़ी जाउछ एंड दिस इज अ कंडीशन ऑफ हाई लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी जोडा रे कि body turns grayish blue. Next 19. Next chala kono question number 19. Which statement correctly explains why carbon monoxide is highly dangerous? It destroys the alveolar epithelial cells by corrosive action. It binds with hemoglobin with high affinity, very high affinity, reducing the oxygen transport. It converts the bicarbonate ions irreversibly into carbonic acid. How? It stimulates excessive respiratory movements, causing alkalosis. कौन हो जाएगा ऑप्शन? बिकॉज आमर कार्बन मोनोक्साइड रे एफिनिटी रा सबुरो अधिका था कार्बन मोनोक्साइड रा एफिनिटी रा सबुरो अधिका था फॉर एनी अदर गैसेस फॉर द हीमोग्लोबिन हैला कार्बन मोनोक्साइड सबुरो अधिका रे बाइंड करबो तापर कार्बन डाइऑक्साइड तापर जाई ऑक्सीजन बाइंड हैला तापर जाई ऑक्सीजन बाइंड करबो एही प्रकार एफिनिटी देखबा जो हम कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग ता सबुरो अधिका कार्बन मोनोक्साइड ता सबुरो dangerous बोली आमे कहूचे इट binds with hemoglobin with very high affinity reducing the oxygen transport तो जदी आमे जते बेले सेहित में बोली जते बेले आमे बाहरे कोसी गोटे माने कोन कहउछंदी पोल्यूटेड जगह को जाउचे हैला बाहरे कोनसी गोटे पोल्यूटेड जगह को जाउचे सेठी जते बेले कार्बन मोनोक्साइड रो कंसंट्रेशन अधिका थाउची ताले से जगह रे हमर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट थाउची दरकार पड़ले एमिति भी कहयो गले कार्बन मोनोक्साइड रो कंपैरिजन रे ऑक्सीजन रो कंसंट्रेशन सबरो अधिका थाउची फिर भी जेहेतु हिमोग्लोबिन रो एफिनिटी टुवर्ड्स द कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सेति में बोली से कार्बन डाइऑक्साइड से तो बेसी एक्टिवली बाइंड करे और ऑक्सीजन से तो करि पारेनी सेति में बोली हमको जो अनकॉन्शियसनेस ब्रेथलेसनेस फील हुए इट इज बिकॉज ऑफ दैट रीजन क्वेश्चन नंबर 20 during inspiration in the humans diaphragm relaxes and becomes dome shaped upward intrapulmonary pressure rises above the atmospheric pressure thoracic cavity volume increases due to diaphragmatic contraction. External intercostal muscles undergo complete relaxation. On our option number question number 20. Question number 20. Inspiration hela belugu इंस्पिरेशन हला बोली कहले हमर एयर इनहेल हला एयर इनटेक हला एयर इनटेक हला टाइम रे कोन होची ना हमर लंग रो वॉल्यूम बढ़ी जाउची लंग रो वॉल्यूम बढ़ी गले ताकू धरि कि थोरासिक कैविटी रो वॉल्यूम मध्ये बढ़ी जाउची थोरासिक कैविटी रो वॉल्यूम मध्ये बढ़ी जाउची हला आ थोरासिक कैविटी रो वॉल्यूम बढ़ी गले डायफ्राग्राम ऊपर हमर कोन होची नसी हमर प्रेशर पकोजी एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाउची contracts and flattens फ्लैट हो जाउची हैला अच्छा तो एथि पई बोली हमर कोन होची ना पड़े वाला thoracic cavity volume increases due to diaphragmatic
contraction है डायफ्राग्राम टा कौन टा डायफ्राग्राम टा गोटे मस्कुलर स्ट्रक्चर टा which is कौन कहउछन एटा को गोटे मस्कुलर स्ट्रक्चर टा which is only it is a characteristic of mammal it is a characteristic of mammal केवल mammal मानकर ही डायफ्राग्राम देखा जाउछ आउ से मसल्स टा कोदर मेड अप ऑफ डायफ्राग्राम मसल is made up of phrenic muscles. Diaphragm muscle is made up of phrenic muscles. है ना? Question number 21. Which structure prevents the food from entering the trachea during swallowing? Glottis connecting the pharynx with esophagus. Epiglottis covering laryngeal opening temporarily. Uvula separating nasopharynx from oropharynx. Soft pellet attached with tracheal cartilage. 21 B. Epiglottis. Yes, epiglottis जोटा कि हमरो सी larynx पाखे गोटे ओपनिंग रे हमरो टेम्पररी प्रेजेंट थाउची larynx को टेम्पररी कवर करछि फूड इनटेक कला आडू से कवर हो जाउची फूड इनटेक हला आडू विंड पाइप टा कवर हो जाउची विंड आसिला आडू फूड पाइप टा कवर हो जाउची हैला तो ये गेला एपिग्लॉटिस टा कोन एडा मध्ये हमर गोटे कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर टा cartilaginous structure ta made up of 9 hyaline cartilages 9 hyaline cartilages हैला 9 hyaline cartilage मिसिगिरी हमरो एटा फॉर्म होछ ओडा epiglottis 22 surfactant deficiency in premature infant may lead to excessive dilation of the bronchial lumen permanently, collapse of alveoli causing respiratory distress, increased carbon dioxide transport as bicarbonate, hyperventilation due to medullary overstimulation. It will cause it will cause collapse of alveoli causing respiratory distress हैला alveoli जो हमर जो सिंपल एपिथेलियम सेल्स गुडा कथिला लाइन हे गिरे हैला किछि सेल कोन हबो किछि सेल कोन हबो से हमर ट्रांसफॉर्म हे जिवो इनटू सर्फेक्टेंट हैला ट्रांसफॉर्म हे जिवो इनटू सर्फेक्टेंट जोडा की हमर कोन करिवो इट हेल्प्स टू रिड्यूस surface tension हैला आउ किछि सेल मॉडिफाई हे जाय हमर कोथरे ना डस्ट सेल्स रे अब ये डस्ट सेल्स उडा को कोन these are the macrophages of the lungs these are the macrophages of the lungs अच्छा ठीक अछि एला तो ये हिरा हमर कोन कोलैप्स ऑफ alveoli causing the respiratory distress question number 23 hemoglobin shows maximum affinity for oxygen when partial pressure of oxygen is high and carbon dioxide is low carbon dioxide concentration rises sharply in active tissues blood pH decreases significantly due to lactic acid accumulation how body temperature increases during vigorous muscle activity आंसर ए
यस वेरी नाइस हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ପାଇଁ ବୋଲି मैक्सिमम एफिनिटी केतले देखेबो जरे ऑक्सीजन रो पार्शियल प्रेशर अधिक देबो कार्बन डाइऑक्साइड अपेक्षा हैला ऑक्सीजन रो पार्शियल प्रेशर अधिक देबो कार्बन डाइऑक्साइड अपेक्षा सेते बळे सी तार मैक्सिमम एफिनिटी देखेबो ऑक्सीजन पे नेक्स्ट एडा कलो a mountaineer ascending rapidly to high altitude experiences shortness of breath and increased ventilation breath shortness माने ब्रीथ करियार प्रॉब्लम बा ब्रेथलेसनेस बोली कहबा या फिर इंक्रीज्ड वेंटिलेशन माने बहुत जोरे रैपिडली इंस्पायर करबा रैपिडली ब्रीथिंग करबा इंक्रीज्ड वेंटिलेशन बोली कहा जाउछ this physiological response is primarily due to which of the following changes that shifts the oxygen dissociation curve कौन करूची decrease in temperature decrease in CO2 concentration and increase in blood pH causing the left shift increase in 2,3 bpg concentration decreased pH and increased body temperature causing the right shift decrease in 2,3 bph increased hemoglobin affinity for oxygen and reduced metabolic rate causing the left shift increased alveolar oxygen tension decreased ventilation rate and reduced erythropoiesis causing the right shift कौन बेड़ा ପାଇଁ बोली आंसर एडी जीव कौन ऑप्शन नंबर 2 हे जीव देखो बॉडी टेम्परेचर बढ़िबा जोगु हैला इंक्रीज वेंटिलेशन होची आउ हमर ऑक्सीजन ପାଇଁ बोली एफिनिटी टा कमी कमी की जाउची ऑक्सीजन ପାଇଁ एफिनिटी कमी कमी की गला बोली कहले हमर कर्व टा को प्रकार जेबो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टा को प्रकार जेबो ए प्रकार नॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टा एति थिला सेबे एमिति जेबो हैला एडा एबे एमिति जेबो ठीक अछि जोडा कि राइट शिफ्ट कॉज करेबो बोली आ राइट शिफ्ट कॉज करेला बोली कहले को प्रकार इफेक्ट देखौची बोर इफेक्ट देखौची आ एडा हमर का ऊपर काम करूची ना टिश्यूज ऊपर काम ऑप्शन नंबर बी हे जिवो करेक्ट आंसर वेरी नाइस भवानी हैला बी हे जिवो करेक्ट आंसर 2,3 बीपीजी रो माने कोन इट इज 2,3 bis phosphoglycerate 2,3 bis phosphoglycerate डन अच्छा एटा केते थिला क्वेश्चन नंबर 24 एबा सो क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 in aquatic organisms like fish the efficiency of gas exchange across gills is significantly higher than that of the lungs in the terrestrial animals से कोची कि गिल्स रे रेस्पिरेशन करले अधिका सिग्निफिकेंटली हमर बेटर गैसेस एक्सचेंज हे परची देन दैट ऑफ द लंग्स आ ता माने गिल्स तो हमर प्रेजेंट अछि सब एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स मानक पाखरे ता माने से माने बेटर हमर एफिशिएंसी देखि परची गैसेस एक्सचेंज रे देन अस एज ह्यूमंस who respire in lungs being terrestrial animals हमर एफिशिएंसी गैसेस एफिशिएंसी टिके कम अछि बोली कहै जाछि why so एटा कोन ठीक की yes obviously it is correct why काहे की देखियो ऑप्शंस देखो ऑप्शन नंबर ए water has higher oxygen content than air and diffusion is faster in the water medium सेमिति किछि नै water रे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सेमिति अधिका न थाए सेमिति तो किछि अधिका न थाए water रे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एयर रे त हमरा अधिका कंसंट्रेशन थाए counter current flow mechanism maintains a continuous diffusion gradient along the entire gill surface gills are composed of thick epithelial layers that prevent water loss and enhance the oxygen binding thick epithelial layer नथाय gills रो हला ना gills रो thick epithelial layer थिबो बोली कहले से माने gases exchange करि पारिबिनी से माने करि पारिबिनी हला नाइ हबानी सी हबनी next oxygen diffuses randomly in gills due to turbulent water flow increasing the surface contact नहीं ना सेरा मत randomly diffuse करिबनी ठीक हमर कोन होची गिल्स रे जतले रेस्पिरेशन होची ना सेते बळे हमर बहुत गुडा अन्य पार्ट्स गुडा मते इन्वॉल्व थाउची छोटा कि आप सिंगल सर्कुलेशन मैकेनिज्म रे देखले हम जानि फिशेस मन कर हैला हमर ऑप्शन नंबर बी हे जो करेक्ट आंसर काउंटर करंट फ्लो मैकेनिज्म मेंटेन्स a continuous diffusion gradient along the entire gill surface हैला along the entire gill surface question number 26 इरी आसी वाला बोले हमन ना हाँ yes least effective ru most effective gases exchange system तो हमें मार्क करिवा skin of earthworm
tracheal system of insect, alveolar lung of the mammal, fish gills. Tracheal system of insect, skin of amphibians, fish gills, mammalian alveoli. Skin of amphibians, tracheal system of insect, fish gills, mammalian alveoli. Fish gills, skin of amphibian, tracheal system of insect, mammalian alveoli. कौन होगा? ହେଲା ଅଧିକା efficient ରୁ କମ efficient ନା ସେ କଣ ପଚାରିଛି least to most ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ପଚାରିଛି least to most efficient ସବୁଠୁ କମ efficiency gases exchange ର କାହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକା efficiency gases exchange ର କାହାର ଦେଖ ସବୁଠୁ କମ efficiency ବୋଲି କହିଲେ earthworm ହବ ନା earthworm ହବ ନା earthworm କୋ phylum କୁ belong କରୁଛି earthworm belong କରୁଛି annelida phylum ହେଲା तार जो स्किन रे रेस्पिरेशन करछन तार एफिशिएंसी सबड कम तबे इंसेक्ट्स मानकर ट्रैकियल सिस्टम आसु टिके बेटर हो जाउछ काहे ना आरो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रे मध्य टिके बेटर अछि ऑर्थोपोडा फाइलम को बिलोंग करछ तापर असले अल्वेओलर लंग्स ऑफ मैमल्स तापर असले फिश ऑप्शन नंबर ए हिज ऑप्शन नंबर ए हिज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 The respiratory membrane in human lung is extremely thin to facilitate the rapid diffusion of gases. This membrane is primarily composed of पूरा discussion कर रिसर्च already हमें आगुरु है ना respiratory membrane विषय रे कौन ना A squamous epithelium of alveoli, basement membrane in endothelial lining of the pulmonary capillaries, cuboidal epithelium of bronchioles and thick connective tissue layers of the alveolar ducts, keratinized epithelial cells and smooth muscle fibers surrounding the bronchi. Stratified epithelial lining of alveoli and thick collagen fibers preventing the collapse. On is 27 na A. Yes. Squamous epithelium of the alveoli, basement membrane and endothelial lining of the pulmonary capillaries. एवढा को सब मिसिरी हमर कोन होची रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होची रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जते मॉइस्ट रहइबो जते पतला रहइबो जते वास्कुलर रहइबो वास्कुलराइज्ड माने ब्लड वेसल्स रे रिचली सप्लाई हेगी रहइबो सेते बेटर हमर हे परिबो gases exchange सेते बेटर हे परिबो gases exchange हैला आ एडा को हमर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोली कहवा गला and it is less than 1 mm it should be less than 1 mm जत्ते पतला हबो सेते भलो जत्ते पतला हबो सेते भलो क्वेश्चन नंबर 28 देख लो The sigmoid shape of the oxygen dissociation curve of hemoglobin is mainly due to random binding of the oxygen molecules to iron without structural change in hemoglobin, cooperative binding where binding of one oxygen molecule increases affinity for subsequent oxygen molecules, linear binding of oxygen with constant affinity in all the 4 heme groups. Now, oxygen binding only at high partial pressure due to irreversible hemoglobin oxygenation. देखो हमर ऑक्सीजन बाइंडिंग दा हीमोग्लोबिन संगे इरिवर्सिबल नुहे रिवर्सिबली से माने बाइंड करो तो ऑप्शन नंबर डी तो कटियो ना लीनियर बाइंडिंग तो हुएनी लीनियर बाइंडिंग हेता ना बोली करे तो ग्राफ हमर स्ट्रेट लाइन पड़े हैला किंतु हमर सेगमेंट शेप रो ग्राफ जो आसुची काहे ना लीनियर बाइंडिंग होनी किछि जगह रे हमर बाइंडिंग दा स्लो ही जाउची बंद ही जाउची बा किछि जगह रे हमर बाइंडिंग दा एफिशिएंटली हे पारुनी सेति मैं बोली हमर ग्राफ टा sigmoid shape अछि random binding of oxygen molecule to iron without structural change in hemoglobin nahi randomly bind हुएनी there are certain conformational changes that occurs तापरे जाइगे हमर oxygen binding होउछ cooperative binding where binding of one oxygen molecule increases the affinity for subsequent oxygen molecules yes this will be the correct option cooperative binding होउछ हैला धीरे धीरे बाइंडिंग होउछ नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 in insects tracheal respiratory system is highly efficient because oxygen is transported through hemolymph directly to tissue using respiratory pigment air filled tube directly deliver oxygen to tissues bypassing the circulatory fluid entirely gas exchange occurs through diffusion across the moist body surface into the blood plasma trachea contain hemoglobin which binds and transports oxygen to the cells
এটা কোন হইছো? It is air-filled tubes. Air-filled tube गुड़ाको. Yes, Payal, very nice. Air-filled tube directly deliver the oxygen to the tissues by passing the circulatory fluid entirely. ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ କି efficiently ଆମେ respiration କରିପାରୁଛି କାହିଁକିନା ଏ bypass କରିକି oxygen କୁ supply କରିଦଉଛି tissues ହେଲା. There are certain tubes, air-filled tubes ଯୋଉଟାକୁ tracheal tube ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା spiracles ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା. spiracles ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା କଣ କହୁଛି ସେ bypass କରିକିରି ଆମର tissues ଗୁଡାକୁ ସିଏ fluid release करे दोचे ऑक्सीजन नेगरी पहुंचे दोचे 13 a shift of the oxygen dissociation curve to the right is actively exercising muscle is advantageous because increases the oxygen affinity of hemoglobin to enhance the storage in blood, decreases oxygen release to maintain stable oxygen level in the blood plasma, promotes oxygen unloading in the tissues where metabolic demand is high, and prevent carbon dioxide accumulation by increasing the binding of oxygen to the hemoglobin. राइट शिफ्ट हेले कोन होची राइट शिफ्ट हेले कोन होची ये हेला हमर नॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये जतले राइट शिफ्ट होची ताले ए टाइप रो है ना ये हेला PO2 तापर ये हेला कोन ना एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन है ना ए टाइप रो होची ना ए टाइप रो होची अच्छा तमाने एटा राइट शिफ्ट हला बोली कहले हमर ऑक्सीजन पे बोली एफिनिटी कमिला ऑक्सीजन कोन हबो अनलोडिंग ही होतबो आ एटा कोडी होची एटा को प्रकार इफेक्ट बोर इफेक्ट हला माने इन केस ऑफ इंक्रीज इन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ हमर ऑक्सीजन अनलोडिंग हमर आरंभ हो जाउची ऑक्सीजन अनलोडिंग हे गिरी टिश्यू सुडा को ऑक्सीजन सप्लाई करछ हला टिश्यू सुडा को ऑक्सीजन सप्लाई करछ अब बोर इफेक्ट हमर टिश्यूज रे होची टिश्यूज रे हो जा बोर इफेक्ट जो हमर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ता राइट शिफ्ट आड़ को मुआई जाउ राइट शिफ्ट आड़ को मुआई जाउ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट डन नेक्स्ट 31 the counter current mechanism in fish gills ensures maximum oxygen uptake because water and blood flow in opposite direction maintaining a diffusion gradient throughout the entire length. Blood and water flow in the same direction, reducing oxygen loss to the environment. Oxygen concentration become equal in blood and water at all points of the gill surface. Diffusion stops once equilibrium is reached at midpoint of the gill lamella. हमें कौन डिस्कशन करथिले जे गिल्स मानकर अधिक एफिशिएंसी अछि बा अधिक रेस्पिरेटरी सरफेस अधिक अछि से मानकर गैसेस एक्सचेंज रो कैपेबिलिटी व्हाई बिकॉज़ से माने काउंटर करंट मैकेनिज्म फॉलो करी काउंटर करंट मैकेनिज्म फॉलो करी गैसेस एक्सचेंज करके डिफ्यूजन करछथि तो वाटर एंड ब्लड फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस मेंटेनिंग अ डिफ्यूजन ग्रेडियंट थ्रूआउट द एंटायर लेंथ हैला नेक्स्ट क्वेश्चन 32 Which of the following statement correctly distinguishes respiration in amphibian compared to the reptiles? देखो amphibian रो respiration कोतरे होची gills रे reptile रो respiration कोरी होची lungs रे हला तो एबे how is it different from each other सेडा को हमें a point रे check करिवा हला तो best the answer कौन होबो amphibians rely exclusively on lungs whereas reptile depend on cutaneous respiration. Nah, it is ulta hi gala. Amphibians use both skin and lungs for respiration, while reptile rely mainly on lungs with keratinized skin lining cutaneous exchange. Amphibians lack pulmonary structures, while reptile possess gills during the adult stage. Both amphibian and reptile use tracheal system for efficient oxygen transport. देखो both amphibian और reptile tracheal system तो use करना tracheal system insects मैंने use करचंदी एटा तो भूले वाला amphibian lack pulmonary structures while reptile possess gills during the adult stage lack pulmonary structures ठीक अछि to a certain extent reptile possess gills during the adult stage केबे नहीं है ना amphibian use both skin and lungs for respiration yes ठीक अछि ये point टा while reptile rely mainly on the lungs with keratinized skin limiting the cutaneous exchange एटा इज correct हैला amphibians rely exclusively on lungs whereas reptile एटा हैला और not only amphibians skin और lungs ପାଇଁ बोली खाली नुहे amphibians माने skin और lungs ପାଇଁ बोली खाली नुहे
स्किन रे भी रेस्पायर करंदी जोड़ा को कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोली कहा जाउची है ना आउ लंग्स एंड बकोफेरिंग्स रे मध्य रेस्पिरेशन करंदी जोड़ा रे कि समानकर अधिकार अधिका एटीपी रो खर्च है एटीपी रो खर्च होउची जते बेले से माने एस्टिवेशन स्टेट रे बा हाइबरनेशन स्टेट रे थांती सेते बेले दे गो फॉर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हला जा द्वारा कि एटीपी रे कम कम खर्च हो नेक्स्ट 33 ए विषय तो हमें पूरा ऑलरेडी पूरा करि सारचे हला द बोर इफेक्ट इन हीमोग्लोबिन फिजियोलॉजी डिस्क्राइब्स increased oxygen affinity of hemoglobin in acidic condition enhancing the oxygen uptake in the lungs, decreased oxygen affinity of hemoglobin in presence of high CO2 and low pH promoting the oxygen release in tissues, binding of carbon monoxide to hemoglobin increasing oxygen transport efficiency, complete inhibition of oxygen binding when carbon dioxide concentration decreases in the alveoli. It is कौन ऑक्सीजन रो एफिनिटी जतरे कमी जाउछ हला ऑक्सीजन एफिनिटी कमी जाउछ ऑक्सीजन एफिनिटी केतरे कमुछ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हाई हे गेले एसिडिटी बॉडी गले H+ कंसंट्रेशन हाई हे गेले H+ कंसंट्रेशन हाई गेला बोली गले pH कमी जीवो pH कमी गला बोली गले एनवायरनमेंट एसिडिक हे गला बोली गले कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ी गला कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी गला बोली गले हाई हीमोग्लोबिन रो एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड टाइम बोली बढ़ी जाउछ आ ऑक्सीजन तापे टिश्यूज रो अनलोड हेबा आरंभ जाउछ हला ऑप्शन नंबर बी correct answer. Colloida कौन अछि? A chronic smoker of 45 years reports progressive shortness of breath. Clinical examination shows barrel-shaped chest and reduced surface area for gaseous exchange. Imaging reveals destruction of alveolar valves. What is the primary pathological change responsible for reduced oxygen diffusion? First, thickening of alveolar epithelium due to excessive surfactant accumulation, permanent enlargement of the bronchioles due to excessive mucus secretion, breakdown of alveolar wall leading to decreased surface area and loss of elastic coil, increased ciliary movement causing rapid expulsion of air from the lungs. हला तो ए केस रे हमर करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ब्रेकडाउन ऑफ द alveolar wall बडा ब्रेकडाउन हे गिरी सरफेस एरिया रा कमे दोची जा द्वारा कि हमरो इलास्टिसिटी रा मेंटेन होनी एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच हम गैसेस एक्सचेंज रा प्रॉपर्ली हे पानी हैला गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर्ली हे पानी आ स्मोकिंग कॉल जो डिजीज रा कॉज होची सेरा कोला एम्फाइजेमा आ एरा को ट्रीट करिया पई बोली हमें बायोटेक्नोलॉजी रो हेल्प रे हैला बायोटेक्नोलॉजी रो हेल्प रे हमें कोन करछे वी हैव gotten some protein which is protein हमें extract करेगी हमें emphysema को treat करिया को release करछे सेरा हला कोन alpha 1 antitrypsin हला alpha 1 antitrypsin ठीक अछि हां बस हां इट्स ओके बस next 35 a 60-year-old patient presents with high fever chest pain productive cough and difficulty breathing. Chest X-ray shows consolidation of alveoli filled with fluid and pus due to bacterial infection. What directly causes the impaired gaseous exchange in this condition? First, accumulation of inflammatory exudate in alveoli replacing air-filled spaces. Excess oxygen diffusion into blood causing oxidative stress in tissues. Permanent dilation of bronchioles leading to increased airflow resistance, excess surfactant secretion causing the collapse of the respiratory bronchioles. So, AD surfactant ऊपर किसी फरक पड़े नहीं. Dilation of bronchioles हबनी, dilation of bronchioles हबनी बोली को dilation of bronchiole ले तो blood flow डा increase देगला, air flow डा increase देगला, better efficiency जो एडा हबनी, हैला. Excessive oxygen diffusion into blood causing oxidative stress in tissue. Oxygen diffusion तो हबनी सही तो मैं बोली तो difficulty in shortness. Difficulty in breath hela shortness in breath hela cough pele amar oxygen diffusion properly he paribani accumulation of inflammatory exudate in alveoli inflammatory exudate mane hochi the material which can cause inflammation hela the material which can cause inflammation in alveoli replacing the air filled spaces yes amar alveoli re jo air hegi present thauchi
10 मिनट एयर हेगी प्रेजेंट थाउची सेटा हमर कोन होची ना सेटा हमर कोन होची ना एल्वियोली रे हमर इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट उडागो सब एक्युमुलेट हे जाउची आ एयर फिल्ड स्पेसेस उडागो ता द्वारा हमर कोन हे होची रिप्लेस हे जाउची क्वेश्चन नंबर 36 a patient shows chronic cough weight loss and blood streaked sputum infection is caused by mycobacterium tuberculosis forming granulomas in lung tissues. What is the main effect of granuloma formation on respiratory function? First, increased alveolar surface area leading to enhanced oxygen diffusion, destruction and fibrosis of the lung tissues, reducing effective gas exchange area, excessive production of the surfactant improving the lung compliance, increased hemoglobin synthesis leading to improved oxygen transport. Both the obvious options है obvious option होगा हाँ सेटा ए होगा क्वेश्चन है कौन होगा obvious options होगा ना option number B destruction and fibrosis of the lung tissue reducing the effective gas exchange area effectively gases exchange ए पारुनी है एक effective gases exchange को भाई हे पारुनी because हमारा lung tissue उड़ा करे fibrosis ही आउची माने fibers accumulation ही है जी किसी ना किसी चीज़ का accumulation ही है जी जात द्वारा की alveolar wall उड़ा रहा हमारा सब defective है जी 37. A miner working for 20 years in Stone Quarry developed progressive breathlessness. Imaging shows fibrinotic nodules in lungs due to inhaled silica particles. Which process best explains lung impairment? First option, deposition of silica induces macrophage activation leading to fibrosis and reduced lung elasticity. Excess oxygen binding to hemoglobin reduces carbon dioxide transport efficiency. Increased alveolar ventilation leading to hyperoxygenation of blood. Expansion of alveolar sacs due to loss of surfactant secretion. Compound 37 na A. Deposition of the silica induces macrophage. देखो macrophages of the lungs कौन dust cells जेतबे कौन से foreign particle enter करेला बोली कहले हमने निहाती macrophages गुड़ा सब activate है बेसिक अब macrophages गुड़ा activate है कि silica को मारिवा चक्कर रे सेमानकर मध्य deposition है बाहर हो जाउची जा द्वारा कि lung रो alveoli रो elasticity रा कमी जाउची अब इलास्टिसिटी कमी गले हमर गैसेस एक्सचेंज टा मते कमी जिवो हैला गैसेस एक्सचेंज टा मते कमी जिवो अब एडा गुटे प्रकार हमर ऑक्युपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बोली कहबा ऑक्युपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बोली कहबा हैला अब ए कंडीशन टा को सिलिकोसिस बोली कहवा जाउछ सिलिकोसिस बोली कहवा जाउछ नेक्स्ट 38 person exposed to smoke in a closed room shows dizziness and hypoxia despite normal oxygen levels in the air. What is the primary mechanism of toxicity? First, carbon monoxide binds irreversibly to hemoglobin, reducing oxygen transport capacity. Carbon monoxide destroys the alveolar epithelium, causing the permanent lung collapse. Carbon monoxide increases oxygen unloading in tissues, leading to oxidative stress. Carbon monoxide enhances the diffusion of oxygen, causing the respiratory alkaloids. कौन हबो B. Destroy करूची जे केंदे करूची डायरेक्टली थोड़ी destroy करूची हमर alveolar epithelium हैला B हबोनी कार्बन मोनोऑक्साइड irreversibly bind कर जाउची hemoglobin हैला तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी कमी जाउची हम जदी क्लोज्ड रूम गोटे रखिबा बोली कहले सेरे ऑक्सीजन लेवल वैक्यूम हो जाउची ना माने ऑक्सीजन लेवल कम हो जाउची ना से जगह वैक्यूम तो नय टोटली ऑक्सीजन लेवल कम हो जाउची कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल अधिक हो जाउची काई कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक हो जाउची बोली कहले कार्बन मोनोऑक्साइड कथा काई कहले काई ना स्मोक कथा उठिची हैला स्मोक कथा उठिची सेही में बोली कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल एडी अधिक हो जाउची आ कार्बन मोनोऑक्साइड ता affinity for hemoglobin is much greater than carbon dioxide or oxygen. तो सेति में बोली सी हमर hemoglobin संगे irreversible binding कर दोछि आउ जा द्वारा कि ऑक्सीजन बाइंडिंग रे प्रॉब्लम होछि आ ऑक्सीजन बाइंडिंग ता हमर रिजल्ट कोछि कोन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमर कमी जाउछि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी कमी जाउछि क्वेश्चन नंबर 39 A shipyard worker develops progressive dyspnea after long-term exposure to asbestos fibers. What is the major pathological outcome? Acute bronchospasm due to allergic reaction in bronchioles,
pulmonary fibrosis leading to decreased lung compliance and impaired gas exchange, excessive surfactant production causing alveolar overexpansion, increased diffusion capacity due to stimulation of alveolar regeneration. कौन हम increased diffusion तो हबनी diffusion तो हमर increased हबनी हैला surfactant increase मध्य हबनी हैला pulmonary fibrosis leading to decreased lung compliance and impaired gas exchange yes हैला एडा ही परिबो acute bronchospasm due to allergic reaction in the bronchial acute हबनी हैला asbestos fiber हमर contact रे आसी तो acute bronchospasm हबनी हबो बोली कहले से permanently हमर डैमेज करि परिबो नहले से long term पई बोली हमर रही परिबो हैला अच्छा आ ए कंडीशन दा कोन कहवा जाउची asbestosis similarly आ गोटे मते सेमि respiratory exchange रो कंडीशन रे अछि charcoalosis एरा जतले चारकोल रो कांटेक्ट रे आसी चारकोल डस्ट रो कांटेक्ट रे आसीबो सेते बेले एटा होछ देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 during microscopic examination of lung tissue a student identifies terminal bronchiole branching into respiratory bronchiole which further open into alveolar duct and finally into alveolar sacs composed of numerous alveoli. Which structural feature is most directly responsible for maximizing the gas exchange efficiency? First, thick cartilaginous ring supporting bronchi and preventing collapse, high folded alveolar walls, highly folded alveolar walls with extensive capillary network increasing the surface area, presence of mucous gland in the alveoli for trapping the dust particles, a smooth muscle hypertrophy in alveolar duct enhancing the air pressure. See पचाची कि हमरो alveoli रे माने gases exchange रो हमरो maximum gases exchange कम पई बोली पाइबो एते कि बस किछ नै खाली स्टोरी लिखाई छी केमिति हमरो लंग टा गोटे पर गोटे उड़ी जाउछ से लिखाई छी मेन क्वेश्चन हला एडा कोडा हम डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर मैक्सिमाइजिंग द गैस एक्सचेंज एफिशिएंसी हाई सरफेस एरिया जते अधिक सरफेस एरिया हबो जते alveoli vascularized हबो जते हाईली फोल्डेड रही गिरी हमर सरफेस एरिया बढ़ेबो सेते बेटर गैसेस एक्सचेंज हे परिबो हला ऑप्शन नंबर बी इज तृप्ति यस नेक्स्ट 41 a researcher examines the branching pattern of human respiratory tract and notes that bronchioles lack cartilage but contain smooth muscles. What is the functional implication of this structural feature? ब्रोंकियोल्स रे हमरा कार्टिलेज न थाए ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई एवडा करे थाउची हैला एवडा करे थाउची कार्टिलेज बट लास्ट को आसला बेले हम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स बेले जोडा रे कि हमरा alveoli अटैच हेगिरी थाउची सेडा आसला बेले हमरा ब्रोंकाई सेडा रे कार्टिलेज न थाउची सेडा स्मूथ मसल्स रे थाउची काहेकि bronchioles remain rigid to maintain constant air flow resistance. Bronchioles can actively regulate airflow through constriction and dilation. Bronchioles are incapable of changing diameter during inspiration, so during respiration. Bronchioles function primarily in mucus secretion rather than air conduction. Eda habani, eda to habani. Ela bronchioles remain rigid habani. Rigid thi thanta boli koy to cartilage present. Cartilage not thai. Ela tahale option number B is. Option number B is. They actively regulate airflow through constriction and dilation. 42. A student studying lung physiology observes that alveoli are closely associated with dense network of pulmonary capillaries, which is the most important reason for this structural association. Amar alveoli would have a densely supply thanti blood vessels. Right? So, I कहली कि जितने better alveoli amara vascularized हबो, जितने better efficiently amara gases exchange हे पाइबो. So, to provide structural rigidity to prevent the collapse, alveolar collapse. 9. To increase the rate of gas exchange by reducing diffusion distance between the air and blood. Maybe our option देखिएगा to increase production of carbon dioxide in the alveolar wall. 9. To prevent entry of pathogen into the respiratory tract. ना हैला option number B is gas exchange टा increase करिबो जत्ते better हमर capillary जाई दिबो सत्ते better हमर air flow हे परिबो सत्ते better हमर distance जत्ते कम हबो सत्ते better हमर gases exchange हे परिबो. So to increase the rate of gas exchange by reducing the diffusion distance between the air and blood. 43. In a pathological condition, destruction of alveolar septa is observed, leading to formation of larger air spaces with reduced surface area. Which lung disease best corresponds to this structural change? Alveolar septa गुड़ाक सब डैमेज हो जाउची, large air space गुड़ाक प्रोड्यूस हो जाउची और large air space हे गला बोली कहले surface area मध्ये कमी गला surface area मध्ये कमी गला और surface area कमी गला बोली कहले हमर gas exchange properly हेई परिबो.
gases exchange properly ହେଇ परिबनी तो एई कंडीशन डा को जगह रे देखा जाउची बी यस हैला कंडीशन होची एम्फाइजम आ एडा हमर सिगरेट स्मोकिंग जो होची आउ एडा को ट्रीट करिया पई बोली हमें गोटे बायोटेक्नोलॉजिकली गोटे मेडिसिन भी बा प्रोटीन ह्यूमन प्रोटीन डिराइव करछि सेडा हला अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन alpha 1 antitrypsin 44. A diagram of the human respiratory system shows progressive branching of trachea, primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, bronchioles, alveoli, with structural trend correctly observed along this pathway. Increase in cartilage and decrease in epithelial thickness. Decrease in cartilage, increase in surface area for diffusion, increase in alveolar number with complete loss of epithelial lining, constant diameter and uniform wall thickness throughout. Now, ଆମର ବ୍ରାଞ୍ଚିଂ ହେଇ ଗଲେ ଆମର ୱାଲ୍ thickness ଟା ବି କମି ଯାଉଛି ତ ଏଇଟା ତ ହବନି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବନି डायमीटर increase in alveolar membrane with complete loss of epithelial lining होनी decrease in cartilage and increase in surface area for diffusion ठीक अछि increase in cartilage and decrease in epithelial thickness है ना 44 टा B next 45 a 20-year-old student undergoes spirometry testing. The graph shows that after a normal tidal expiration, the individual is able to forcibly expire additional air, but still some air remain in the lung that cannot be expelled even with maximum effort. अब एडी का कथा कह जाय छी एडी हमर रेसिडुअल वॉल्यूम कथा कह जाय छी कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन हला परे मध्य हमें एति की वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल आउट करि पाउनु जोडा कि 1100 रु 1200 ml जाय हमर रेंज करूची which of the following correctly identifies the air remaining and its physiological significance obviously कहि देली एडी ना residual volume preventing the lung collapse and maintaining the continuous gas exchange है ना continuous gas exchange B 46 a trained athlete shows significantly higher tidal volume and increased vital capacity compared to a sedentary individual however their residual volume remains nearly unchanged which explanation best accounts for this physiological adaptation कौन होगा enlargement of alveoli leading to increased residual air storage, strengthening of respiratory muscles, improving inspiratory and expiratory reserve volumes, reduction in lung elasticity, improving air trapping efficiency, and decrease in total lung compliance, increasing the dead space ventilation. Strengthening the respiratory muscle, improving the inspiratory and expiratory volume, reserve volumes. Option number B. 47. At high altitude, reduced oxygen partial pressure triggers physiological adaptation over time. Which adaptation helps compensate for reduced PO2? कहीं partial pressure of oxygen टा कमी जाउछ compensate करिया कोन केमिति compensate कर परिया decreased RBC count reducing blood viscosity increased erythropoietin secretion increasing RBC production decreased hemoglobin concentration improving oxygen unloading, reduced ventilation rate to conserve the carbon dioxide. B. Pyrotrypty. ठीक अछि. Increased erythropoietin. Erythropoietin number कौन करछि? Erythropoiesis करोछि kidney रो release होछि जो. Increasing the RBC production. है ना? Increasing the RBC production. 48. During inspiration, thoracic volume increases leading to changes in lung pressure and airflow. How does this relate to partial pressure changes in the alveoli? First, increasing alveolar pressure draws air into the lungs. Decrease in alveolar pressure allows atmospheric air or higher partial pressure to enter the lungs. Partial pressure of oxygen decreases externally, causing air inflow. Carbon dioxide partial pressure increases in atmosphere during the inspiration. Correct answer is option number
बी एरिथ्रोसाइट्स माने तो आरबीसी बट एरिथ्रोपोइटिन दा कोन एरिथ्रोपोइटिन दा होचे से हार्मोन दा जोटा कि किडनी रो प्रोड्यूस होची एरिथ्रोपोइसिस करेबा पई हैला एरिथ्रोपोइसिस करेबा पई बोली एरिथ्रोपोइसिस होची द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीस आ आरबीसी रो फॉर्मेशन दा बोन मैरो रे हैला किंतु बोन मैरो रे आरबीसी फॉर्मेशन करेबा पई बोली जो हार्मोन दा दरकार से हैला एरिथ्रोपोइटिन हैला 47 48 decrease in alveolar pressure allows the atmospheric air or higher pressure to enter into the lungs हैला 48 B 49 in metabolically active tissues like skeletal muscles during exercise oxygen is rapidly consumed हैला skeletal muscle रे जदि हम exercise करले कि कोन से प्रकार अधिक active metabolism show करूचे ताहले हमरो oxygen गुडा rapidly consume हो जाउची why so because which change in partial pressure is primarily responsible for oxygen diffusion from body blood into tissue कौन अब ऑप्शन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 49 एडा अब ऑप्शन नंबर बी हां बी lower partial pressure of oxygen in tissue compared to the arterial blood हैला नहीं lower partial pressure of oxygen in tissue compared to the arterial blood next 50 a gas mixture contains oxygen nitrogen and carbon dioxide the total atmospheric pressure is 760 mmHg oxygen contribute 21% of the mixture what is the approximate partial pressure of the oxygen एडा मध्ये हमें कैलकुलेट करिया सिखितिले partial pressure केमिति करिबा कैलकुलेट partial pressure माने होची the pressure of individual gas in a mixture of gases तो हमर एटमॉस्फेयर बहुत प्रकार गैस अछि से भीतर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे देला 760 mmHg ऑक्सीजन 21% रे प्रेजेंट अछि तो 21% रे हमर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस केते रहइबो ऑक्सीजन रो पार्शियल प्रेशर एमटी कैलकुलेट कराबो 21% इनटू 760 mmHg जोटा कि हमर 21/100 इनटू 760 mmHg 159 पॉइंट रे केते आंसर आसबो जोडा कि हम राउंड ऑफ करके 159 mmHg बोली कर दोछ एडा एटमॉस्फेयर रे ऑक्सीजन रो पार्शियल प्रेशर 159 mmHg हेछि हैला 160 देछि एडी 159 हमरो कंसीडर कोचे 159.6 देछि ना 159.6 देछि तो राउंड ऑफ करके 160 कर दोछ एडे 160 हबो 159 हमरो रेंज रे हमें मानुछ हैला सो यस थैंक यू एवरीवन Thank you everyone. That's it for today. I hope ajro class tomana pai boli helpful heitimo. See you next time. Ame puni aw gode kichra questions re next class re join kariba. Thank you so much everyone. Jai Jagannath.